क्वेश्चन है इफ द डेटर्स इन द बिगिनिंग एंड एट द एंड आर 2 लाख एंड 12 लाख रिस्पेक्टिवली, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ PR आर रुपीज़ 50,000 रुपीज़ 30,000 रिस्पेक्टिवली, द एवरेज अकाउंट रिसीवेबल इज, तो एवरेज में इन सबको प्लस करके डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर 2,10,000, 2 लाख, 1,50,000 या 2,50,000, तो आंसर आएगा 2 लाख. If current ratio is 2:1 and working capital is 30,000, then its current liabilities are rupees 20,000, rupees 25,000, rupees 30,000, rupees 55,000. तो आंसर है 30,000. If cost of goods sold is rupees 3,10,000, operating expenses rupees 2 lakh and net sales rupees 6,80,000 are given, then operating ratio will be 60%, 75%, 80% या 49%. तो आंसर है 75%. If operating expenses are deducted from gross profit, then we get net loss, gross profit, operating profit, cost of goods sold. तो आंसर है operating profit. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे. इफ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज रुपीज़ 20,000 एंड टोटल एसेट्स आर रुपीज़ 1 लाख, द रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स विल बी 15%, 20%, 18%, 35%. तो आंसर है 20%. नेक्स्ट क्वेश्चन. डेटर्स इन द बिगिनिंग rupees 40,000 and debtors at the end rupees 50,000. If credit sales during the year is 2,25,000, then debtor turnover ratio will be, तो यहाँ पे हमारा क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स आएगा, तो इसको निकाल के आएगा 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 2.5 टाइम्स, 2.25 टाइम्स. ये ऑप्शन है, तो 5 टाइम्स आंसर है. If credit purchases during 1996 are rupees 2 lakh and accounts payable on 1196 are 31,1296 are 46,000 and 34,000 respectively, then creditors turnover ratio will be 6 times, 5 times, 18 times, 2.25 times. तो 5 टाइम्स इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो? क्विक रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो. तो क्विक रेशियो का दूसरा नाम होता है एसिड टेस्ट रेशियो. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पार्टी इंटरेस्टेड इन नोइंग द लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी, क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, नन ऑफ द अबव. तो क्रेडिटर्स. नेम द पार्टी इंटरेस्टेड इन नोइंग द प्रॉफिटेबिलिटी एंड सेफ्टी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, लेंडर्स, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, नन ऑफ द अबव. तो शेयर होल्डर्स. Next question. Comparison of financial statements of 2 or more firms is known as inter-firm comparison, intra-firm comparison, both 1 and 2, any of the above. So inter-firm comparison. Next question. Which of the following is not a limitation of analysis of financial statement? Window dressing, historical, price level changes, errors in accounting. So errors in accounting. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, प्राइस लेवल चेंजेस, यूज ऑफ डाइवर्स प्रोसीजर, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर्ड, ऑल ऑफ द अबव. तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? नोइंग सॉल्वेंसी ऑफ बिजनेस, नोइंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, जजिंग ग्रोथ ऑफ बिजनेस, ऑल ऑफ द अबव. आंसर